20 लाख नौकरियां, 1 लाख लैपटॉप, 5 से 75 लाख रुपए तक कर्जे से वफाकी हुकूमत ने नौजवानों के लिए कौमी खजाने का मुंह खोल दिया। हुकूमत का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का भी ऐलान। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब और मुआविन खसूसी शहजाद फातिमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। माजी में चलने वाले प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत अहल तलबा में 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को 20 लाख नौकरियां देने के लिए निजी शोबे से मिलकर प्लान तैयार कर लिया गया। अपना बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स का जल्द इजरा होगा। 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे मिलेंगे। खवातीन भी फायदा उठा सकेंगी। हुकूमत ने नौजवानों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। नौजवानों को कर्ज और लैपटॉप भी मिलेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मुआविन खसूसी बराए उमूर नौजवान शहजाद फातिमा के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यूथ प्रोग्राम का मकसद 15 से 29 साल के 5 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए रोजगार मुहैया करना है। रोजगार का एक मेन फोकस है, उसका मकसद है। उसके साथ साथ बिजनेस लोन्स हैं, लैपटॉप स्कीम्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब 2011 से पंजाब में उन्होंने ये पूरा मंसूबा शुरू किया था। और इनोवेशन अवार्ड्स हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर नौजवान नस्ल को इंगेज करके उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जा रही हैं जिसमें उनका न सिर्फ रोज़गार बल्कि स्किल डेवलपमेंट और बेशतर ऐसे एरियाज़ हैं जिनको देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी शहजाद फातिमा बोली, नौजवानों की सलाहियत को इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। शहबाज शरीफ साहब ने 2011 से ई रोज़गार, ई लर्निंग सेंटर्स, पंजाब के अंदर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड जो कि एशिया का सबसे बड़ा एंडाउमेंट फ़ंड था वो शुरू किया। सेहत के लिए हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स, कॉलेजेस पे काम किया। तो यूथ प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तकरीबन पिछले 12 सालों से जो है वो उसको लीड कर रही है। शहजाद फातिमा ने मजीद कहा, लैपटॉप स्कीम में बलोचिस्तान का हिस्सा 2 गुना कर दिया गया। नौजवान वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट के जरिए कर्ज अप्लाई कर सकते हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत मालियाती इदारों से की गई कमिटमेंट पूरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुआशी टीम के अहम इजलास में फैसला, ज़राए के मुताबिक मुल्क के दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, कर्जों की बरवक्त अदायगियाँ की जाएंगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुल्क दिवालिया नहीं होगा। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, बताइएगा इजलास में क्या फैसले हुए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आज हुकूमत की मुआशी टीम का अहम इजलास हुआ और मुख्तलिफ अफवाहें जो डिफॉल्ट करने के हवाले से खासकर जो तहरीक इंसाफ की जानिब से फैलाई जा रही थी उनको यकसर रद्द किया गया। और वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी कि डिफॉल्ट होने का कोई ऐसा खतरा मौजूद नहीं है। और हुकूमत की जो मुआशी टीम है उन्होंने जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। और आज के इजलास में वज़ीर ख़जाना इसाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक और FBR के हुकाम जो है वो भी मौजूद थे। और मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर के जो मुहरक़ात के हवाले से उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जो अफवाहें हैं उनको यकसर आज की फिर इस इजलास में मुस्तरद किया गया और कर्जों की जो बरवक्त अदायगी हैं उनको यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म को जो है वो ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से भी ये हदायत जारी की गई कि साबिक़ हुकूमत की जो तबाह हाल माशे थी उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए और तमाम जो इक़दाम हैं फॉर रिलीफ के वो भी फौरी किए जाएँ और आवाम की रिलीफ के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। PTI का एक बार फिर वफाकी हुकूमत से आम इंतखाबात कराने का मुतालबा। PTI रहनुमाओं शफकत महमूद और हम्माद असर की मशीर वज़ीर आला पंजाब मुसद्दिक अब्बासी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें शफकत महमूद ने कहा कि केसेस खत्म होने तक ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ये भगोड़ों को वापस ला रहे हैं। हम्माद अजहर बोले, उनके केसेस में तहकीकात के दौरान पुरअसरार तौर पर लोग हलाक हो जाते हैं या कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त कौम के साथ मजाक हो रहा है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद ने सलमान शहबाज और शरीफ खानदान को निशाने पर लिए रखा। ये जो सलमान शहबाज है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस किस्म की ज़बान उसने इस्तेमाल की चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के लिए। तुम अपना स्टेचर देखो और तुम इमरान खान साहब का स्टेचर देखो, तुम क्या चीज़ हो। 16 अरब रुपया इनके अकाउंट्स में से निकला। इसको शर्म आनी चाहिए ये सलमान शहबाज को करप्शन की बातें करते हुए।
वज़ीर मुमलिकत हिना रेबानी खर इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। It poses a serious threat to peace and security, and I think if there's one thing that has bogged this region down, it is the scourge of terrorism. And there's one country which has been on the receiving end of the scourge of terrorism, it is Pakistan. Yet the other country, which is the source of terrorism in Pakistan, continues to play the drum of being the victim of terrorism. I mean, it's a remarkable world, right? It's a very interesting proposition that we find ourselves in. Now, coming back to the Lahore incident, it is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India, which was to target innocent civilians in Pakistan, Lahore, Johor town. India, which was to target innocent civilians in Pakistan, Lahore, Johor town. It reflects India's persistent hostility towards my country and the use of terrorist proxies to achieve nefarious objectives. And we believe objectives which are actually going to harm them also. Because when you try and burn a neighbor's house, the fire will come and burn you too. Our professional law enforcement agencies and judicial authorities have brought the perpetrators of this attack to justice, who have received punishment, but these are only the frontmen, as we all know. The masterminds and the facilitators remain at large and under Indian state patronage and protection. I can assure you that the government of Pakistan will pursue this relentlessly at every level. Now, India has already earned the infamy for its terrorist designs and actions. Its actions in the IIOJK, the infamous massacre in Indian Gujarat, which made some countries close its door on many well-known Indian leaders, and which still ensures that many other Indian leaders still continue to glorify this incident. They want to identify with that incident rather than away from the incident. This shows the psyche which is currently going on, and I tell you, it's a dangerous one. The Samjhota train incident that we all know about, its terrorist proxies continue to use neighbors' territories and blatant support to Baloch militant organizations. All of these point to one objective and one method. The objective is to undermine Pakistan's peace and security, and the method is simple: terrorism. Now, we can call what India is doing to be many things, okay? I think, fragment of a sentence which describes it well is chronic terrorism syndrome, okay? And how do you define it? You perpetrate terrorism, you fully supported and abetted by the state. The Lahore incident, the Samjhota train incident, the Yadev evidence all point out to that. You play as a victim of terrorism to gain international sympathy and create subterfuge. No country has used terrorism better than India. To play on the back of the attention of the world on terrorism and to play the victim, no country has benefited from it better than India. Portray yourself or itself as the champion of counter-terrorism. Has always played lip service, but had made no contribution to international counter-terrorism in any way. If you compare Pakistan and India, you will find Pakistan will always be in the forefront of counter-terrorism, of ensuring that we are a player in the world to try and make sure that terrorism does not continue to haunt us. It also continues to divert international attention from its state-sponsored terrorism and human rights violations in the IIOJK. It blatantly violates international laws and regulations to continue terrorist activities and their support, facilitation and financing. Maybe it will not be very wise to bring it in this context, but allow me to remind all of you that India is a country which continues to be what I call a rogue state. Because the country that tries to deny the existence of Security Council resolutions and insists on other countries imagining a certain part of disputed territory as its own shows what type of a mindset this country has. And I can say, of course, it's a very, very dangerous mindset. Create hurdles in judicial proceedings when terrorism cases are sub judice. Paralyze United Nations Security Council. And this is also very rich because, do what you blame others for. Okay? So India has been consistently paralyzing United Nations Security Council's sanctions regime by blocking listing of Indian terrorists actively aided and financed by the state of India. And in this, I have 4 names that I can share with you
I think at the end of this, which are recent Indian nationals whose listing has been blocked by India. In fact, I do have those names with me. This is Gobinda Patnaik, Parthasarthi, Rajesh Kumar, and Mr. Dongara. All 4 names blocked by India in UNSC listing. And obviously, I think I don't need to remind anyone that India has had a constant role in destabilizing its neighboring countries and weaken their economies to try and pursue its hegemonic designs in the region. CPEC, Balochistan are very good examples. I also question, I can just try and remind India that you cannot have islands of excellence in a sea of depravity. So when you try and harm your region, you actually end up harming yourself. Now, we can understand that India is currently very frustrated because Pakistan has been, because of the delisting of Pakistan from FATF's grey list, right? They have completely mastered the art of using international organizations for their political gains. I think they should give lessons on that type of diplomacy to the world. Now, this cannot change the fact that India remains the recruiter, the financier, the facilitator of various terrorist outfits and foreign terrorist fighters within the region. The world may be ignoring this, what I would consider to be a festering pool of terrorism, but at its own peril. Now, what is ironic, as I've already said, is that India has been beating the terrorism drum, chairing UNSC meetings on terrorism. Now, it has been caught red-handed in this particular incident, orchestrating terrorist attacks in its neighboring country, Pakistan. Let me be clear to you, and as I've already said, when you burn your own neighbor's house, the fire will reach you too. I think India should desist from this policy and start looking at this region as a neighborhood that it is. India's unabated slip into the abyss of extremism is being clouded by this growing India, emerging India narrative. And let me conclude by saying, because you might be asking what is the, yes, this is all the evidence, the dossier is there, but what is the purpose? We believe truly that the international community, in particular the UN and FATF, have the responsibility now to hold India accountable for its terrorist actions. So we are looking for accountability. The Lahore incident for us is a test case for the credibility and integrity of international counter-terrorism and counter-financing of terrorism regimes. The world must show that efforts to counter terrorism are non-discriminatory. The international conscience cannot be held hostage to what are clearly political and economic exigencies of the time. I also want to draw the world's attention to the victims who lost lives or were injured in the Lahore terrorist incident, as well as their families and loved ones. They look towards all of us for justice. We have shared this dossier with the members of the United Nations Security Council. We are also sharing it with the UN Secretary General. We hope that they would look into this evidence and fulfill their responsibility. Pakistan, for its part, will remain fully committed to eradicate terrorism in all its form and manifestations. As far as this specific issue is concerned, I know you already know from the Interior Minister's briefing, but I will just repeat. Red warrants through Interpol have already been issued. Mutual legal assistance requests to countries whose territory has been used for this incident have been sought, and we are, as we already said, will be formally taking it up at the UN. We have shared the copies, are in the process of sharing the copies of the dossier with the Security Council members and the United Nations Security Secretary General. And our expectations of the world is that if this is allowed, because of India's growing, because of what we call the exigencies of political and economic interest, we will all have to pay the price for it. We will all have to pay the price for it. So with that. Yes. मैम अलानुर वजीर मशरिक टीवी चैनल से गुलभूषण यादव और फिर अभिनंदन और अभी ये जो मौजूदा हुआ है, तो क्या आप पर उम्मीद है कि भारत को इन सब कुछ का सजा मिलेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, सॉरी। सो देखें, जो फैक्ट है वो ये है कि अगर कोई मुल्क एक दूसरे के ऊपर हम वो तो कह सकते हैं, एलिगेशंस लगाना आसान है,
ये मुल्क ये करता है ये। अगर एक मुल्क का एक एजेंट पकड़ा जाए, फिर वो पूरी तरह कह भी दे कि वो किसके एजेंडे पे आया था, किसका एजेंट था, और वो हाजिर सर्विस हो और वो निकल जाए, और फिर भी दुनिया उसको तस्लीम ना करे या उसको क्वेश्चन, सो दैट वुड बी आयरॉनिक। सो हाँ, हमें इस पे उम्मीद है कि ये जो इनका ट्रेल ऑफ एविडेंस आता जा रहा है, मैंने बल्कि आपसे नाम नहीं लिया ना, आपने अब ये मौका दिया तो मैं इसका बताना चाहूंगी कि पिछले 3 सालों में 211 individuals of law enforcement agencies have been attacked through raw-sponsored attacks. There have been 1,213 attacks in Pakistan in the last 3 years where we have evidence that they were raw-sponsored. Now, if I take you through the list of the last, आप कह रहे हैं ना कि उम्मीद इसी चीज़ पे हो सकती है ना कि दुनिया को नज़र आ जाए, सामने आ जाए कि कितना ज़्यादा उनकी तरफ से ये होता जा रहा है. Now, attack on PC Hotel Gwadar, 11th May 2019. Attack on Chinese Consulate Karachi, November 2018. Attack on Oil Exploration Company at Gwadar, October 15th, 2020. Suicidal attack at Gwadar, 20th August 2021. Suicidal attack on FC camp at Panjgor Noshki, February 2022. Indian disinformation campaign we all know about. So really, my question is, how much is too much? And is this not too much? And how would we allow a country to drum the terror, to use the terrorism drum on a platform like the Security Council? And how do we deny, then questions are asked about the credibility of these institutions, of course. So I think this is clearly a very serious matter, and real questions need to be asked. Yes, ma'am. थैंक यू मैम. मिनिस्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, राशिदा सियाल अब तक से पुलवामा अटैक हो जाए, पठानकोट हो जाए या मुंबई अटैक्स हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से इंडिया की जानिब से जो एक केस, स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, फिर फैटफ में भी पाकिस्तान को पॉलिटिसाइज करके जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है या प्रेशराइज किया जाता है, जो आपने एक पूरी सिलसिले बताए जो अटैक्स इंडिया ने किए पाकिस्तान में, क्या वजह है कि हम उस तरीके से अपना केस नहीं लड़ सकते? हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है या क्या वजह है कि फैटफ के अंदर हम इंडिया को लिस्टिंग क्यों नहीं करवा सकते हैं? एक तो ये जानना चाहूंगी. सेकेंडली, इससे हटके आपका रिसेंटली अफगानिस्तान का विजिट हुआ और उस विजिट के हवाले से भी कुछ बात हुई कि वहां पर आपकी जो मीटिंग्स थी हाई ऑफिशियल्स के साथ वो नहीं हो सकी हैं. इसमें किस हद तक सदाकत है कि एक खातून वजीर खारजा के जाने से शायद वहां कोई मसाइल हुए? ये एक इम्प्रेशन है और नेशनल असेंबली में भी इस पे बात हुई है, तो इस पे आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी. शुक्रिया. Okay. I will not entirely agree with, I will speak in English because, I will not entirely agree with the fact that we have not been able to make a case. Okay. As I said, and I repeat, and I say this because as someone who's been associated with foreign policy management for many years now, I would have wished, I would have hoped 10 years back that 10 years from then, we'd be looking at a different region. That we'd be looking at a region which was at least moving towards opening doors towards each other, for its people, towards prosperity. But we see this continuation of trying to, bog the region down with the scourge of terrorism, right? Now these incidents, the fact that you have Yadav here, all these are clear signs of a very large country trying to dampen the entire region through its, what I would consider nefarious designs, right? I don't think these designs are good for India also, because India is also part of the neighborhood. It should want the prosperity of the neighborhood. Now that thought process is something that you can't change, that we would like to be able to change. So if you see in the last 5 to 10 years, India has changed tactics and become much worse than it used to be, where it is now propagating, extremism in some ways, and propagating against certain minorities. What it did in IIOJK, what it did for its own elections, sent jets into one nuclear power, sending jets into another nuclear power. Do we need evidence of more irresponsible behavior for the world? That's evidence enough. And then we all found out what was in there, in Balakot, which was told, the world was told that there were certain camps, etc., and we found there were some trees.
हिना रब्बानी खर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था जौहर टाउन धमाके में भारत मुलविस है। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान हुकूमत इस मामले को आलमी सतह पर उठाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मज़ीद कहना था पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनका कहना था कि भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश करता है।